रुकी रुकी सी जिंदगी थक के चल पड़ी, ये गाना था जो हमेशा आई लव्ड इट। एंड इसके गाने के पीछे थे आफ्ताब, जिन्होंने एक मस्त पिक्चर में अपना डेब्यू किया था। एंड जनरली आफ्ताब, मैंने रोज तुम्हारे घर के पास ही पिक्चर देखी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मेरे भी घर के पास ही by the way। तुम्हारे घर मतलब के आप- पास ही मतलब बोला आप भी- मैंने। अच्छा मेरे घर Yes। मैंने सुना आपके घर के पास। तो मुझे पता चला कि हीरो के पास ही रहता, तो मैंने रोज में जाकर पिक्चर देखी थी। तो इस वक्त हम हैं मालदीव्स में, एक बहुत ही खूबसूरत सा मैच होने जा रहा है जब भारत और मालदीव्स के सितारे एक साथ हैं। और मेरे साथ आफ्ताब हैं, और आफ्ताब पसीने से तरबतर हैं। आई थिंक तैयारी पूरी है, जोश पूरा है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है और हमारे मालदीव्स के काउंटर पार्ट्स के खिलाफ खेलना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम एक दूसरे को मिलते नहीं हैं, बट इन अ स्टेज लाइक दिस मैं इतना कहता हूँ कि वी हैव नॉट रियली प्लेड फुटबॉल, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उनके खिलाफ कुछ अच्छा प्रदर्शन करें और एक दो गोल तो मारे ही मारे। फुटबॉल हमारे देश में जनरली क्रिकेट की तरह स्टेटस नहीं पा पाया, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में प्रतिभाएं हैं, और अब धीरे धीरे लोग फुटबॉल को भी उतना ही पसंद करने लगे हैं, जो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। क्या लगता है फुटबॉल को लेकर हमारा देश थोड़ा सा क्यों इतना ढीला हो जाता है? ना आई थिंक क्योंकि हम लोग इतने क्रिकेट ऑब्सेस्ड हैं, इतनी क्रिकेट फ्रेंजी है हमारे देश में, तो कोई स्कोप बचता ही नहीं है बाकी स्पोर्ट्स के लिए। हालांकि इतना बड़ा देश है, इतना टैलेंट है। आई थिंक वी कैन नर्चर so much of talent in our country कि हम लोग we can't even imagine because of the population and just the talent. But I think slowly जैसे कि आपने कहा कि it is gaining a lot of importance and popularity, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उस world stage तक आने के लिए। And I think we have the talent, so I believe that it will happen at some point. I don't know when. I hope it happens soon. इस वक्त हम मालदीव्स में हैं। मालदीव्स पिछले 2-3 सालों में सब सेलिब्रिटीज़ ने फेमस कर दिया हॉलिडे पिक्चर्स डाल के। बट देयर इज मोर टू मालदीव्स देन द हॉलिडे पिक्चर्स एंड द बीच। I think it is. Maldives is a beautiful destination और यहाँ की hospitality और आपने देखा होगा, I mean, I think it's so beautiful. You will not find these kind of white sands and oceans and service anywhere in the world. But yeah, I mean it's I think it's a hotspot for people's holidays और सब लोग इसको फेमस करते हैं वैसे सोशल मीडिया पर। बट फर्स्ट टाइम हमें माली देखने को मिल रहा है, एंड वी नेवर बीन टू माली, क्योंकि अक्सर जब हम लोग आते हैं मालदीव्स में तो हम लोग वी गो टू एन आइलैंड या तो रिजॉर्ट में जाते हैं, बट माली सिटी में पहली बार हम लोग देख रहे हैं। एंड इट्स लाइक एनी अदर सिटी, it's bubbling, it's vibrant, it's got a young crowd. I think it's fabulous, except for the weather sometimes, but I think it's fabulous otherwise. ये बताइए, यहाँ के लोगों से आप मिले, कैसे उनकी हॉस्पिटैलिटी और वार्मनेस लगी? दे वेरी डाउन टू अर्थ एंड They believe in hospitality, they believe in service, because their number one source of revenue is tourism, and tourism is all about hospitality. अगर आप अपने मेहमान को अच्छी तरह से ट्रीट करो, मेहमान नवाजी करो, तो people come back and keep frequenting your destination, and they believe in hospitality. आफ्ताब, हमने इंटरव्यू की शुरुआत की इनकी पहली फिल्म के साथ, मुझे याद है मस्त, मुझे बहुत पसंद थी। तो जब आई रिमेंबर, आई एम गोइंग बैक टू दो डेज, तो जब मस्त रिलीज़ हुई, एंड आज भी आई थिंक पीपल व्हेन दे मीट यू तो दे रिमेंबर यू विच फिल्म, बिकॉज यू हैव अ बॉडी ऑफ वर्क फ्रॉम अ कसूर टू हंगामा इज अनदर वन माय फेवरेट्स। I mean मैंने ये नोट किया, अभी 23 साल मुझे हो गया, अभी मैंने नोट किया है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सो मेनी फिल्म्स। हर एक दर्शक का एक अलग मेमोरी होता है, आई मीट और आई कम अक्रॉस सो मेनी मैसेजेस, सो मेनी पीपल हु नेम डिफरेंट फिल्म्स ऑफ योर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे कि मस्त वो जो फिल्म स्टार से ऑब्सेस्ड है, जो स्टार से ऑब्सेस्ड है या थे, उनको मस्त से बहुत आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि दे रिलेट टू अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन फॉलिंग इन लव विद अ सेलिब्रिटी। Then I have a large section of people who love Kasoor, because even though it's my second film and I played negative, they just love the whole aura, the music, the feel, the romance, everything. They loved it. And then of course you have the people who love comedy. Then there's Awara Pagal Deewana, there's the Masti, there's the Hangama. जैसे कि आपको भी पसंद है Hangama, but I think everyone has their own things that they relate to. So I find people from all walks of life identifying with different works of mine, which is nice to know that you have the plethora of work where people can identify with you different roles. What as an actor gives you more? Because comedy looks very nice, but it's a very difficult genre, and I think I don't find it difficult at all. I'm really sorry, but I find it enjoyable. Okay, I love to laugh. तो मुझे पता है कि मतलब लोगों को हंसने का बहुत शौक है. So there is a certain timing जो it flows, it happens. When you work with people, आपको पता होता है कि मतलब if you have it in you, the timing.
But personally, sorry to cut you off, but personally, I think that I prefer more intense stuff. Halaki, I mean, I can't be biased towards one particular genre, but I love action, I love thrillers, I love even horrors. You started off as a child actor. I remember you in Chalbaz with Sri Devi and so many other films. तो किस तरह से आपकी एक journey as a child actor to successful actor, now a husband and juggling between father, juggling between London, Mumbai, so much work has been from that time. When you were a kid, you used to face the studios, limelights, that time. Yeah. No, I think it's beautiful. You know, one has to have a story in life to tell the coming generations, your future generations, your children. I think I have a pretty nice one to tell. By the grace of God, I've been fortunate, and of course, the people who give me so much of love for over 23 years. And like you said, I've been acting since I was 1.5. I did the FARX commercial, as people know. So I've had the exposure to camera. I've been blessed with the camera. And people have liked me by the grace of God, so I have no complaints. But it's a fascinating journey. I would say at no point in this journey should an actor ever feel that he or she knows it all. It's always, you learn at every step, you know. Like today, after doing so many films, after doing so much of work, I feel I've not learned, you know, enough. I honestly just keep on wanting to learn, and I think that should be the attitude, you know, to just keep your head down, be humble, constantly believe that you don't know anything, so that you learn more, you experience more. Such a pleasure to talk to you, Aftab. I've loved your work, and I'm sure whatever you do, you'll always excel. I hope so. I excel here today. I've not played for decades, but I can tell you that we're going to try. And we have a lovely coach who's sharpening up our skills. But you know, हम लोग सब ने बहुत सालों के लिए फुटबॉल नहीं खेला है, क्योंकि हम लोग सब क्रिकेट पे ही इतना फोकस करते हैं. पर हम लोग कोशिश करेंगे. और वहाँ पर मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले. बट ये उम्मीद करेंगे कि आज हम लोग थोड़ा सा अच्छा शो करें लोगों के लिए और हमारे फैंस के लिए. Thank you so much. All the best, and you rock always. Thank you. Goodbye.